गुड इवनिंग। मार्केट क्यों गिर गया भाई? व्हाई डिड द मार्केट फॉल? नो, बट यू टेल मी व्हाई डिड द मार्केट फॉल? नो, आई वांट टू नो व्हाई डिड योर मार्केट फॉल? रॉन्ग क्वेश्चंस। रॉन्ग? या रॉन्ग क्वेश्चंस। आप ये मुझसे पूछना चाहते हैं मार्केट क्यों गिरा? सवाल गलत है। आपको पूछना चाहिए था मार्केट गिरने से पहले क्या हमें पता लग सकता था कि मार्केट गिरने वाला है तो हम ट्रेड ले लेते। कैसे पता लगाएं कि हमें मालूम पड़ जाए पहले से ही कि मार्केट गिरने वाला है? What can we do to learn that the market is about to give a big move and about to fall? What should we learn so that we can take the trade? This is the right question. You've been trading for so many years. आपको टीवी देख देख करके आपको यही समझ में आ गया है कि समझने की कोशिश करो मार्केट क्यों गिरा है. बिकॉज अंडरस्टैंड दे आर इन देयर टीआरपी बिजनेस. They have a business of their own. They are not there to help you. You all this while you've been watching the TV to understand why did the market fall, because after the fall they call 500 experts on their different channels and they give their views. Is their view valuable right now? How often have you been able to make money after listening to their views? Post market fall especially. So therefore your question is wrong. Next time you should be prepared and you should say, what should I do to keep myself aware whenever there is a market move expected? चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपको पहले से कैसे मालूम पड़ जाए, ये सवाल होना चाहिए आपका. बहुत टाइम बाद समझ में आया मेरे को भी है. पहले मैं भी आपकी तरह पूछता था, नहीं नहीं पर मार्केट गिरा क्यों, क्या फर्क पड़ता है, पीएचडी करनी है क्या मैंने, मार्केट गिरा क्यों? मैं तो नोट कमाने आया हूँ यहाँ पे. अगर आप पीएचडी करने आए हैं तो कुछ रिसर्च ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पे पीएचडी करिए. तो अगर ये पैसे बनाने का काम है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं तो प्लीज सवाल बदलिए अपने. आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स. अब आगे क्या होगा? हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर सेल्फ? भाई वही तो बता रहा हूँ ट्रेड प्लान में, ध्यान से सुनो. ओके, लेट मी टेल यू where we are today. If I can quickly show you, this is the market fall from 27 September to 25th of October. 28 calendar days and 19 trading days. 2,200 points have fallen from the all-time high, 8.39%. So 8% से ज्यादा मार्केट फॉल हो चुका है. निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं. इसको लेट्स गो बैक टू monthly first. I know because monthly is not yet valid, but monthly is up. Month is about to finish. Today is 27th. This plan is for 28, 29, 30, 31 and 1. 28, 29, 30, 31 and 1. Correct. तो मेरा व्यू मोस्टली मोस्ट ऑफ द वीक के लिए है, नॉट फॉर द फर्स्ट को देखते हैं क्या होता है. बट अभी तक जो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट के लिए we'll have to relook at it. More important is to see what will market do in the next few days. ये देखिए, ये निफ्टी है. लेट मी जस्ट जूम दिस इन सो दैट यू स्टे फोकस्ड ऑन निफ्टी. ये देखिए निफ्टी, इसको भी 2 मिनट के लिए हाइड कर दीजिए. व्हाट डू यू सी? इज द मार्केट बुलिश और बेयरिश? बेयरिश है. कॉमन सेंस बेयरिश है. बट रिमेंबर दिस इज द मंथली चार्ट एंड द मंथ इज अबाउट टू एंड. सो the market's texture is extremely bearish. This is on monthly. We will have a look at it once again around end of this month. Where we will review the situation. But monthly is bearish. Weekly, same bearish. But understand one thing: the ones who are initiated will know what is to be done. If I plot
these indicators. अब आपको क्या समझ में आ रहा है? ये हमारा 22 ईएमए है और वीकली में 22 ईएमए पर निफ्टी आ चुका है। हिंट मिल गई? सपोर्ट पे है जी। So the low it made was 24,073.9। मेरा टारगेट 24,100 का था। 24,100 का मैंने 23rd की रात को मैंने जो वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड किया था, मैंने कहा था 24,100 तक मार्केट आ सकता है और आ गया कंफर्टेबल, और नीचे भी चला गया बल्कि। दैट इज ऑल्सो टेलिंग अस दैट more fall may come, but let me keep my cursor here rather than let me just make a horizontal line here for your reference. What are you seeing? यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये एक रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये सपोर्ट बना। अब ये दोबारा उसी लेवल पे है। कहाँ पे? सपोर्ट पे। ये तो आपको इस लाइन पे दिख रहा है, आपको 22 ईएमए पे भी दिख रहा है, ये सपोर्ट पे आ गया है 24,106। ठीक है, वीक है और नीचे जाएगा, लेकिन अभी शायद नहीं जाएगा। आरएसआई देखिए 50 पे है, 49.95 50 पे है, वीक जोन में है लेकिन सपोर्ट पे है। नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? लेट्स गो वन बाय वन। हमने मंथली देख लिया, तो टोन बेरिश है, वीकली की टोन बेरिश है, बट सपोर्ट आ चुका है। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड दैट वी आर एट सपोर्ट डेली। Super trend and 22 EMA are coinciding beautifully around 24,800. Possible pullback in the times to come to approximately these levels. एक ब्रॉड लेवल का आइडिया लग गया। यहां पे भी देखिए S2 पे है 24089, यहां पे आकर के इसने बाउंस लिया है। Listen, remember very clearly, whenever you see long lower wick, that means buying has come. Look at this long lower wick. ये देखिए लोअर शेडो दिख रही है ना आपको, ये देखिए लंबी सी शेडो दिख रही है। ये 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 दोनों यहाँ पे छोटी छोटी हैं। ये 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 जब यही शेडो ऊपर होती तो नीचे जाता है, लेकिन ये शेडो नीचे है, ये विक नीचे है, दैट मीन्स बाइंग हैज इमर्ज्ड एट दिस लेवल 24,089। दिस इज द डेली चार्ट माइंड यू। अब कल क्या होगा? ट्यूजडे, सॉरी मंडे, मंडे 28th। What am I expecting? Let's go to hourly charts. In fact, on both Nifty and Bank Nifty, there has been a fair amount of bounce. कितना bounce आया? Let's have a look. बैंक निफ्टी में bounce आया है wait a second, बैंक निफ्टी में आया है about 500 points। ठीक है, और निफ्टी में आया है on 150 plus points। It's a good bounce, 150 plus points and 500 points respectively, Nifty and Bank Nifty. We have to just watch now. If the first hour closes above, ये मैं दोबारा लगाता हूँ, 1 मिनट दीजिए मेरे को, इसको सेट कर लेता हूँ। या हियर, इसका हाई कितना है?
24,179. If the first hour candle managed to close above 24,180 broadly close, then we may be considering that there is a possibility of pullback, and in which case shorts should be completely avoided. Completely. ठीक है. रेफरेंस में बैंक निफ्टी का नहीं निफ्टी का ले रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. 24,180. आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखी है पहले से, राइट फ्रॉम द टॉप. Broadly, the market has touched this and fallen, touched this and fallen, and so on and so forth. So expect some kind of a resistance around this place. Do not jump in with all your money in calls. No, not at all. Go step by step. Last time also I said nibble. Don't put all money one time. यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा. It will find resistance somewhere here. It will stutter, want to come down, and it may again want to go up. These are the levels. याद कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए. 24, 363, 460, 654, 847, 800 के आसपास हमने पहले भी बोला था कि एक पॉसिबिलिटी है, तक जा सकता है. रिमेंबर व्हेन आई सेड 797 एंड 804, तो 800 की लेवल दिख रही थी. वही लेवल आपको यहाँ पे भी दिख रही है, करीब करीब 800 टू 850 की लेवल. यहाँ तक कब जाएगा? कल जाएगा? बहुत मुश्किल है. अनलाइकली, वेरी वेरी अनलाइकली. बट नेक्स्ट कुछ दिनों तक जा सकता है. वेरी मच पॉसिबल. कल कहां तक जाएगा? सो आई वुड लाइक टू इनिशिएट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट my weekly is at support, I could possibly initiate a call trade with very small quantity, with a reasonable stop loss, and I'll explain that to the soulmates. Reasonable stop loss, and I'll like to hit on the upside. First, so if this is your morning trade, this is where you may like to book out. If it is a positional trade, hold on, wait for 180 to be broken out, and then take a positional trade on the upside. Which index, which strike price, which expiry, डायरेक्शन बता दी ना मैंने आपको. अपने आप प्लान करिए बाकी चीजें. आई एम श्योर यू कैन डू दैट. अब जब ये आ जाता है, देन यू हैव टू सी कि ये कहां तक जाएगा. लेट मी जस्ट एनेबल दी pivots etc. सो 24,233 पे जाकर के ये क्लोज हुआ है फ्राइडे को. नेक्स्ट लेवल 1, 2, 3 ये दिख रही हैं, और 4, 363, 460, 543 एंड 654. एक दिन में शायद नहीं आएगी. It will take some time and it will face resistance. At each level, it will face resistance. It could, right? Not it will, it could. ठीक है. और अगर ये लेवल टूटता है, फॉर एग्जाम्पल जो फ्राइडे का लो है, लगता तो नहीं है लेकिन फिर भी जस्ट इन केस 893. So let's say 23,900 broadly should be a decent support, because this is the entire 100% retracement of the fall. The up move started from here on 5th of August. Remember, after the election results. So यहां से शुरू हुआ था और उसके बाद यहां तक गया था. नहीं, ये इलेक्शन का रिजल्ट का नहीं है. आई एम सॉरी. इलेक्शन रिजल्ट तो यहां आया था 4th जून को. या दिस इज नॉट इलेक्शन रिजल्ट. माय बैड, माय अपॉलॉजीज. बट ये वो दिन है जहां से एक क्लियर अपमूव शुरू हुआ था. तो यहाँ पे एक बड़ा सॉलिड सपोर्ट है 23,900 पे. जो at most a fall can come up to here, but it looks very unlikely, because it had to come, it would have come by Friday. So that is the point. Anyway, keep the
keep the trend line in sight, uh, and take your positions accordingly. Okay. This is where I would like to also give you an idea about India VIX. After rising, India VIX has for the last 15 minutes, 15, 15, 15, 15, लास्ट एक घंटे में इंडिया विक्स लगातार नीचे गिरा है, indicating the possibility of a sustenance of an up move. निफ्टी के लिए appropriate time for up move is likely to come up on Tuesday 9:30 a.m. सुबह ही, but कल थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है. And if it works, then this can be a good place to go long if the price action is positive. This is all I would like to say right now. By the way, what a fall it was. What a fall it was. And all who knew how to find out the direction, this is where the Bank Nifty cracked and this is where the Nifty cracked. I, along with many of the people in Elite Group and SoulMates, were sitting on puts and the puts became rocket. आपको याद होगा 23rd की रात को मैंने कहा था कि कल मार्केट थोड़ा ऊपर हो सकता है. Why? Because bulls were winning the match on that day. Sure enough, on 23rd I had made this video and I talked about 24th. 24th को सुबह देखिए क्या हुआ. 24th की सुबह the same puts, and I said I'd exited 80% of my positions. Same puts which were at that time of close trading around 940. ये कौन सी पुट है बता देता हूँ आपको. ये 52,000 की पुट है. 52,000 at 940 it was available for less than 750. 200 पॉइंट का फॉल था और वही 200 पॉइंट पे जब फॉल पे हमें चीप मिली 200 से 300 पॉइंट, we were able to tank up the entire positions and look at what happened the other day, Friday. And when the targets were reached, there was no FOMO, there was no greed. Matter ends, we exited out. Absolutely green day. And not for me, but everybody. Everybody who associated with me was able to make good of the fall. अब फोकस कॉल पे करिए, पुट पे नहीं. अगले कुछ दिनों तक फ्राइडे का बताऊंगा मैं आपको, बट मंडे टू थर्सडे पॉजिटिविटी ही दिख रही है. बाउंस बैक आने की पूरी पूरी उम्मीद है. अगर नीचे भी जाता है, आपको ने बता रखा है 23,900 बहुत सॉलिड सपोर्ट. ठीक है. पीसफुल रहिए, ट्रेड बहुत पीसफुली करिए, सोच समझ के करिए. सारा पैसा इकट्ठा मत लगाइए, मत लगाइए. गलत ट्रेड हुई तो सारा उड़ जाएगा. थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, निबल करो छोटे छोटे साथ के साथ. You will be agile, you will be nimble, and you'll be able to take quick action and salvage the position within no time if you have some balance money in your pocket. You'll understand it over time. जो नए ट्रेडर्स हैं वो समझते नहीं हैं. वो सोचते हैं मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख का 1 लाख लगा दूंगा. ऐसे होता नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन बदलिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था. आस्क द राइट क्वेश्चंस टू गेट राइट आंसर्स. If you are benefiting from my videos, please feel free to like, subscribe, and share this video with your friends, with your network, with your family members, whoever is in trading, whoever you know, and they can also benefit. आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आप उनके ऊपर एक एहसान कर दीजिए by sharing this with them. Feel free to comment, give me your suggestions. I would look forward to your ideas, suggestions, and I will also request that uh, watch these videos carefully, and also I request to watch the previous video of जिसमें मैंने 24th के बारे में बोला है. उसको जरूर देखिएगा. 40 मिनट्स वीडियो है, लंबा है, लेकिन आपको उसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो. ठीक है.
Oh, by the way, I also have a subscription plan where you can subscribe and be part of the Soulmates for less than 5,000 rupees per month. It is renewable. If you feel that you are benefiting from it, you can renew it. Otherwise, it's okay. I'm sure you would like to figure out and see what the elite and what the Soulmates have been doing. Wish you all the best. Good night and the green day tomorrow. Take care. Bye bye.